Hello there, this is Rebecca from RA Knowledge Spot. Dear students, we are going to start chapter number 5 of class 10, that is sets and functions. And here we are doing exercise number 5.0 set because this exercise is very important and there are many concepts here that we are going to study. And first of all, like before we start the exercise, I want to discuss with some definitions that are very useful respect to this exercise. First of all is set. You already heard and learned about set. What is a set? Set is a collection of well-defined and distinct objects. I want to give you a brief description of set. That is collection. Set is a collection like you are going to get together something. Well-defined is something that you know about. If I'm going to talking about set players of a cricket team, everybody knows that they are the cricket team players, and if I'm talking about the football players, they are individually or they are different. Nobody will are going to mix together. Or if I'm going to say this is the student, like Umair is a student of that class and he is very intelligent, but might be possible he is not as much as Ali. It means we are not going to make a clear description about that one, but there's something that is very particular and that is very specific, or everybody know about that. I have told you about the players of the team. It means that they are well defined and everybody know they are the player of that cricket team or the football team. Now, what is the distinct? Distinct means like different. Like this, the element of the sets you cannot make them like you not revise them. You cannot repeat them. Like you can see there is example, and all the time the set is going to show with a capital letter A, and there are some elements in it. It could be like the names of the boys, the fruits, or the letters, or ABC, something like that. Okay, next we are going to have another definition that is very important, and you are going to do it first time, that is ordered pairs. Now, what is it? Order pairs आपके पास क्या है? First point is any two numbers x and y written in the form of this parenthesis, this small bracket, this round bracket is called an order pair. Like कोई से भी दो number हो सकते हैं. When you are going to write in this form, in this method, this is called an order pair. Okay. Furthermore, इसकी जो description है, in an order pair x y, the order of the number is crucial. Like the order of the number is very important. We cannot write like 2 3 is not equal to 3 2. They should be in that order. इसको आप change नहीं कर सकते. तो crucial का मतलब है important. Next key point is x is the first coordinate and y is the second coordinate. Like if the first element is x coordinate and the second is y coordinate. Now we are going to have a very important definition, that is Cartesian product. Now what is it? Like in sets, dear students, you have heard and learned many operations like union, then intersection, then complement, or now we are going to do that as another operation, you can say, that is Cartesian product. Let x and y be two non-empty set. Non-empty means they have something in it. Sets, then the Cartesian product of x and y is denoted by x cross y and is defined as, इसको कैसे define करेंगे हम? Like x and y is equal to this is the not the round but a mid bracket or the curly bracket, x comma y, such that the colon sign shows such that we are going to elaborate more like what is x and what is y. The small x belongs to capital X and the small y belongs to capital Y. This is a kind of Cartesian product. With example, it will be more clear to you. Like there are two set x and y, and there are three elements, and there we have two elements. Okay, we are going to do the cross product. It is called Cartesian product. How? Like one with A, one with B, then two with A, two with B, then three with A and three with B. Okay, then this is like whole about Cartesian product. It's so simple. हम कैसे करते हैं कि हम पहले एलिमेंट को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले को दूसरे साथ, बिकॉज y में कोई और एलिमेंट है नहीं तो हम फर्दर आगे जा ही नहीं सकते. फिर अब इसका हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं, सेकंड एलिमेंट विद फर्स्ट, देन सेकंड एलिमेंट विद second, and so on. Don't forget to write a comma here, and also when you finish the order pair, once again you have to write the comma sign. This is the method how we write Cartesian product. Okay, next, the very important, that is binary relations. Okay, what is a binary relations? Binary relation is something okay, first of all this is something very important. ये चीज इतनी order में चलेगी. देखिए sets है तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं. ओके, पहले सेट है और फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है. उसके बाद अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन वी कैन
find out the binary relations. So the things are very in order. Any subset of Cartesian product x cross y is called a binary relation from x to y. कोई भी subset आप उठा लें इसके अंदर से, इस Cartesian product के अंदर से कोई भी subset आप उठा लें तो वो आपके पास क्या होता है, बाइनरी रिलेशन होता है. या इसके अलावा आप कह सकते हैं it is usually denoted by small r or capital R, and we write it r from x to y, or you can say r from x to y is a binary relation. With furthermore example, it will be more what is a binary relation. But here is an example. Like once again, okay, हमने यहाँ पर एक example ली है so that you people should not be confused. Do not be mix the things. So there are example x and y. The sets are here, and this is Cartesian product. You very well know what is it and how to find it because we have discussed it. And this is a relation, a binary relation. Why I'm calling it R1? Because I have made two relation for you. This is the first relation, like I have choose two order pair 1a and 2a. And what is it? This is a sign of subset from x cross y. Like इसके अंदर से हमने एक subset choose किया है और हम इसको कहते हैं ये relation number 1 है. There is another relation that is R2 और इसमें हमारे पास तीन सबसेट चूज किए इसके अंदर से और दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन. एंड आफ्टर रिलेशन, रिलेशंस के बाद हम बाइनरी रिलेशन के बाद हम बनाते हैं डोमेन. व्हाट इज अ डोमेन और व्हाट इज इट? एक्चुअली डोमेन आपके पास क्या है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन. आपके पास इसके एग्जांपल में आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा. वैसे इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास सेट होते हैं, ये जो हमने रिलेशंस बनाए, इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन. नाउ व्हाट इज रेंज? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज. You can see the example, the two sets, then Cartesian product, relation, and now the domain of the relation, it's 1 and 2. You can write 2 1. Okay, ये इसकी जो domain है वो आपके पास क्या है? 2 और 1 इसकी domain बन चुकी है. ओके, इसकी रेंज देख लें. आपके पास a है और जो जो डोमेन होती है वो क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं उसके आपके पास x के, और ये रेंज के एलिमेंट है आपके पास जो y के a के एलिमेंट होते हैं. जो y के एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं, जो x के एलिमेंट है वो डोमेन है. नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज फंक्शन. व्हाट इज अ फंक्शन? ओके, अब देखिए सबसे पहले आपके पास क्या था? आपके पास सेट थे, सेट से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम की, कार्टेशियन के बाद आपने बाइनरी रिलेशन बनाए. अब कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होता है, अब बाइनरी रिलेशन R, कैपिटल R, दैट इज अ रिलेशन. याद रखिए ये रिलेशन बन चुका है, ये रिलेशन है हमारे पास. फ्रॉम x टू y का मतलब है कि वो x और y से हमने बनाए हैं वो जो रिलेशंस हैं. और वो फंक्शन कब होता है, उसकी कंडीशन क्या है? इफ, अगर उसकी कंडीशन ये है आपके पास कि उसका जो डोमेन ऑफ रिलेशन है, उस रिलेशन का जो डोमेन है, अगर वो खुद कैपिटल X यानी कि फर्स्ट सेट आ जाता है तो ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है. देयर आर टू कंडीशंस वी आर गोइंग टू हैव. नो एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिपीटेड इन R. उस रिलेशन में डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. दैट विल बी फर्स्ट एग्जांपल इज अगेन x and y, their Cartesian product, their relation. Now we check is this is a function or not a function. Okay, first of all अगर आप इसकी डोमेन देखते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी डोमेन जो है वो 1 2 3 है. इट मींस इसकी तो डोमेन पूरी की पूरी आपकी कैपिटल X के इक्वल आ चुकी है. इट मींस ये यहाँ पर उसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है. दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू कैपिटल X. Now which shows first condition of the function is satisfied. Okay, now since no element of domain is repeated in R1, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि इसका डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है यानी कि 1 2 3 इंडिविजुअल आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 2 टाइम्स लिखा गया या 1 के साथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1 b लिख देती तो ये फंक्शन ना होता क्योंकि यहाँ पर 1 2 टाइम है या इसकी डोमेन रिपीट हो रही है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन. Therefore R is a function. So we are going to have another relation. हम एक और relation लेते हैं, that is R2. ये एक relation आपके सामने नजर आ रहा है. हम देखते हैं कि ये function है कि नहीं. Now we are going to check. Okay, इसकी डोमेन चेक करें जरा जो कि आ रही है 1 2. Oh my God, what is it? यहाँ पर तो इसकी डोमेन 1 2 आ गई, जबकि हमने क्या कहा था कि फंक्शन क्या होता है कि जो उसकी डोमेन होती है वो कंप्लीट कैपिटल X आना चाहिए. दिस इज नॉट कैपिटल X, इसमें 3 नहीं आ रहा. Okay, it means this implies the domain of R is not equal to X.
it shows first condition of function is not satisfied. इसमें first condition satisfy नहीं करी. Even इसकी second देखें, since element of domain is repeated in R2 और इसके element भी repeat हो रहे हैं, इसका मतलब this is not a function. Okay dear students, यहाँ पर हमारी सारी definition, we have finished all the definitions and the lecture is finished here. Now we are going to start exercise number 5.5. Okay, that is question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? ये एक्सरसाइज नंबर 1 का 5.5 का पहला क्वेश्चन है. इफ L is equal to ABC and M is equal to 3 4, then find two binary relation. Now we are going to find two binary relation, L cross M and M cross L. Solution we are having L cross M, that is this one, and this is the very simple, you know how to find it, Cartesian product. So this is A3 A4, then B3 B4 and C3 C4, and then what is it? Now we are going to make binary relations. ओके, बाइनरी रिलेशंस बनाने जा रहे हैं हम इसके. एंड आफ्टर दैट दिस इज द रिलेशन. अब उसने हमें कहा कि टू बाइनरी रिलेशंस बनाने, ये हमने एक रिलेशन बना लिया एंड दिस इज द सेकंड रिलेशन. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू हैव M क्रॉस L, बिकॉज हमने M क्रॉस L को भी करना है. अब ये दो सेट्स हैं, जिस फर्क ये है कि वहाँ पर L क्रॉस M है और यहाँ पर M क्रॉस L है. वंस अगेन दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड देन हियर वी आर गोइंग टू हैव दिस इज R1, इसका जो फर्स्ट है. यहाँ पर नेक्स्ट जो है इसकी इसका जो R2 है अनदर रिलेशन. सो हमने यही बनाना, रिलेशन से खत्म हो चुकी हैं. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें. y is equal to this set and then makes two binary relation y cross y. y cross का y का मतलब है कि y को y से मल्टीप्लाई करना है. एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज. ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये y है और y क्रॉस y, सिंपल, इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट. देन ओके, R1 मालूम करेंगे, इसका फर्स्ट रिलेशन है, और देन इसकी डोमेन, क्योंकि इसमें फर्क है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में. लाइक इन क्वेश्चन नंबर 1 यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज, बट इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज. लाइक दिस इज द डोमेन. ओके, यहाँ पर ये मत देखें कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट यू हैव टू राइट इन वंस, बिकॉज रिमेंबर set has not repeated element in them. Okay, range of R1, that is in front of you, this is -2 1 and 2. This is domain and range of R1, because in question we are required two binary relation. This is R2 and this is domain of R2. इसकी domain आपके पास ये है, and the range is 1 and 2. 1 repeated 2 times, but you have to mention it 1 time. Okay dear students, we are going to have 1 and 2 question. Then in the next videos I'm going to show the other questions. Hope so you are clear till now, सब कुछ समझ आ गई. If you're having any question, any problem, please comment me and ask me there is any kind of issue. Okay, good luck.